Fossils are remains of dead plants or animals that got buried under the surface of the earth millions of years ago and then decomposed fuels produced from the remains of these plants and animals are known as fossil fuels. Coal Coal is found in layer under the ground in these parts of the earth which were covered by forest millions of years ago. When these plants died, they got buried into the ground. They were crushed under debris when the earth then changed its shape during earthquakes and volcanic eruptions. कोल मतलब कि जो बर्निंग कोल होते हैं इस तरीके से कोयला जिसे कहते हैं जो फ्यूल मतलब इसमें ऑयल डालने के बाद हम आग के लिए इस्तेमाल करते हैं इसका। ये एक तरह की एनर्जी ही कहलाती है। कॉल मीनिंग ये रहा इस तरीके का। एंड ये किस तरीके से होते हैं, अर्थक्वेक में भी ये पाए जाते हैं। और वॉल्केनिक इरप्शंस जैसे कि बड़े बड़े जो पत्थर्स होते हैं उनका जो इरप्शन होता है उसमें भी ये मिलते हैं। एंड डीड प्लांट्स वेयर कंपोजिट अंडर एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर्स। दिस इज हाउ दे ग्रेजुअली टर्नेड इनटू कॉल। दिस पैलेस वेयर द अर्थ इज डग अप टू extract coal is known as a coal mine. Coal is used to cook food, generate electricity and run steam engines. Petroleum. Petra means rock and oleum means oil. Petroleum or rock oil is called crude oil. It is very dark and thin liquid which is actually a mixture of a number of chemicals. Millions of years ago, most of the life on the earth was in the sea. When thus organisms such as algae and zooplankton died, their bodies were buried under layers of mud and silt on the sea bed. पेट्रोलियम रिफाइनरी सिया की लॉउड लेयर्स इस तरीके से है। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे पेट्रोल रिफायर होता है, क्लीन होता है। एंड सिया बेड अंडर द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर द रिमाइंस चेंजेड इनटू द क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। क्रूड ऑयल गॉट कलेक्टेड इन लार्जेज पूल and it is now taken out by drilling through layer of rocks. Crude oil is refined and refineries to get petroleum kerosene. Its activity corners. Observe your surrounding and make a list of two renewable source of energy and two renewable source of energy. Quick, what is a fuel? How is a coal formed? फ्यूल क्या है और कॉल में से किस तरीके से वो फॉर्मेट किया जाता है, और क्वेश्चन है। आंसर इसका हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। नेचुरल गैस इज कैन exit along with crude oil. It is also found in coal mines. However, there are a few wells that produce only natural gas. It can be used directly for burning. It is filled in cylinders and is used of fuel. Natural gas is used in the form of composite natural gas. CNG is in vehicles. आप देख सकते हो जैसे नेचुरल गैस है उसमें से ही कंपोज होती है नेचुरल गैस। सीएनजी व्हीकल्स में यूज़ की जाती है। एंड सीएनजी केसेस लेस एयर पॉल्यूशन एंड देयर फॉर कंसिडर्ड टू बी लेस हार्मफुल टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए ये सीएनजी पॉल्यूशन एंड देयर फॉर कंडीशंस हार्मफुल है। एंड कन्वर्टिंग फ्यूल्स, वी आर कंटिन्यूसली यूजिंग up our reserve of coal and petrol. This reserve cannot be renewed and it will take a million of years from them to from again. Moreover, once they are burnt, they are finished forever. Scientists estimate that our coal and petroleum
reserves will last only for another 100 years approximately. It is therefore important that we do not waste fossil fuels. We should use them judiciously. Conserving fuels. We are constantly using our reserves of coal and petroleum. These reserves cannot be renewed, and it will take millions of the year them to from again. Moreover, once they are burnt, they are finished forever. Scientists estimate that our coal and petroleum reserves will last only for another 100 years approximately. It is therefore important that we do not waste fossil fuels. We should use them just judiciously. If we do not conserve petrol and coal, our future generation might see them only in museums, along with the vehicles with run on them, both coal and diesel on burning cases, pollution and breathing problems. Therefore, vehicles which can run on battery or solar energy are being developed today. We can save on fuels by walking to palace wherever possible or by using bicycle. We can also use public transport. We should hold awareness campaigns in our neighborhoods to educate people about how fossil fuels and depleting fast. All of us have to contribute in some way or the other towards a common goal of achieving a clear and greener earth. Keywords: fuel, a substance which in the is burnt to produce heat and power or energy is known as a fuel. ओके यहाँ पे आप देख सकते हो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कॉल fossil fuels and coal, petroleum, natural gas made from dead composite plant matter under extreme temperature and pressure extracted from coal mines used to cook food, generate electricity. It's किस तरीके से यूज होता है उसका. एंड पेट्रोलियम डार्क एंड थिंक लिक्विड made from buried animal matter collected by digging through layers of rocks used to run vehicles. Natural gas can be found alongside petroleum or coal. Individual wells also exist used as composite natural gas in vehicles. Okay, exercise. Write true or false. फर्स्ट है कॉल इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. ट्रू. सेकेंड है रॉक इज ऑल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल. ट्रू. पेट्रोल एंड डीजल विल लास्ट फॉर एवर. फॉल्स. विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी विल नॉट अवेलेबल एनी मोर इन द न्यू फ्यूचर्स. ट्रू. वी शुड यूज आवर कार टू ट्रैवल शॉर्ट डिस्टेंस. फॉल्स. मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट है फ्यूल का आएगा ई प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी. रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ए विंड. फॉसिल फ्यूल्स डी कोल एंड पेट्रोलियम. क्रूड ऑयल रॉक ऑयल. नेचुरल गैस इको फ्रेंडली. fill in the blanks. Fuel is burnt to produce heat and power or energy. Second है wind and solar energy are renewable forms of energy. Petroleum and diesel are non-renewable forms of energy. Coal and petroleum are fossil fuels. Petrol and liquid fuel where coal is a solid fuel.